کرنا چاہیے آج جو گیپس ہیں لکوناز ہیں جن کو ہم نے فل کرنا ہے چیلنجز کیا ہیں اور ان کے سلوشنز کیا ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ وی سٹ ہیئر ٹوگیدر ٹوڈے ایز اے ٹیم کور کمانڈر صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ ابھی میری بات بھی ہوئی ہے پہلے بھی میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی ہی واز کائنڈ انف ٹو کال آن تو مجھے یہ خوشی ہے کہ وی آر آن دا سیم پیج وی ورک ٹوگیدر ایز اے ٹیم اینڈ دا تھریٹ دیٹ is confronting us today. I think terrorism is the most complicated form of warfare and it has destroyed, ruined, annihilated nations, countries, superpowers. And despite asymmetry of power, despite lopsided power, terrorism alone has annihilated powers. Lekin I, as a Pakistani, am very proud that Pakistan is one of the most fortunate countries who has survived terrorism, the worst form of terrorism, and combating it very, very effectively. Usme main appreciate karna chahungi role of all stakeholders, جس میں سویلین سائڈ بھی شامل ہے جس میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز پاکستان آرمی جو ہے اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں تو میں سب کے رول کو ایز اے پاکستانی ایز دا چیف ایگزیکٹو آف دا بگیسٹ پروونس آف پاکستان میں اس کو دل کی گہرائی سے اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں اور یہاں پہ something that has always been very close to my heart شہداء کا جو رول ہے ہم آج every day that we see a peaceful Pakistan is a glowing tribute to the sacrifices that our shaheeds have offered. They have laid down their lives so we could live. We live because of them. And every day that passes peacefully is a glowing tribute to them. Abhi recently وہ کیپٹن جو شہید ہوئے تھے چکوال میں ان کے گھر گئی ان کے فادر بھی ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے آنیسٹلی میں ایٹ ٹائمز سوچتی ہوں میں چاہے گلگت بلتستان میں گئی ہوں الیکشن کیمپین کے لیے یا میں آزاد کشمیر میں گئی ہوں الیکشن کیمپین کے لیے ایوری ویئر دیٹ آئی ہیو گون فار مائی پولیٹیکل کیمپینس میں ہمیشہ میری یہ کوشش ہوتی تھی رائٹ فرام 2018 جب سے یہ شروع ہوئی ایک ہمارا پولیٹیکل اسٹرگل کا پیریڈ تو میں ہمیشہ جاتی تھی شہداء کی جگہوں پر اور میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کیا جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو خوشی خوشی اپنی وہ زندگیوں کے نذرانے دیتے ہیں تو میں جب وہاں پر چکوال میں گئی میں اس کے پیرنٹس سے بات کی 4 اس کی بہنیں تھیں اینڈ ہی واز دی اونلی برادر میں نے کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا اینڈ آئی فیلٹ دیٹ دا پیرنٹس ور پراؤڈ پیرنٹس اور بہت ایک ہارٹ ٹچنگ مومنٹ تھا اور انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا انہوں نے کہا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے لیکن یہاں کا جو THQ ہے آپ اس کو ٹھیک کر دیں اس کو ریویمپ کر دیں اور وہ میرے بیٹے کے نام پہ کر دیں تاکہ دنیا یاد رکھے کہ ایک بیٹے نے قوم کے کتنی بڑی قربانی دی I was very touched. So I salute every one of you, those present here and those not present here, that have made this possible today. پاکستان میں یہ پرابلم بہت دیر سے چل رہی ہے یہ مینس بہت دیر سے ہے لیکن جب یہ APS کا واقعہ ہوا میں I was an eyewitness. I witnessed that through very close quarters. تو اس کے بعد جو ایک نیشنل ایکشن پلان بنا which is why we are sitting here today. I think وہ بہت comprehensive ایکشن پلان تھا جس کو دنیا نے ریکگنائز کیا. اٹ واز ریکگنائزڈ
globally, world over. पिछले कुछ सालों में unfortunately उस तरह से उस पे काम नहीं हुआ. We as a team that sit here today, I think हमारा ये resolve होना चाहिए कि हमने ना सिर्फ उसको दोबारा से उसकी असल स्पिरिट में शुरू करना है, बल्कि ये जो जितना भी गैप आ गया है उसमें हम अगर पीछे चले गए हैं तो हमने उसको बीफ अप करना है, हमने उसको आगे लेके चलना है. और जो नेशनल एक्शन प्लान बना उसकी वजह से जो एक पूरी कौम के अंदर ये कोई स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है जिसको पाकिस्तान आर्मी करेगी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करेंगी या पॉलिटिकल साइड करेगी. इट्स द होल ऑफ अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स and it is more importantly it is whole of a nation response. And I personally feel कि जो ज़रबे अज़्म और रद्दुल फसाद की एक कामयाबी की वजह थी, the core reason of its success was that the entire nation was standing behind those two operations. And एक political consensus build हुआ, एक religious consensus build हुआ through the National Action Plan, and I think that contributed greatly to the success of those two historic operations. And resultantly, I talk about Punjab, I talk of Punjab. I went to, in my initial days, I went to the CTD, and I was very happy to see, as a Pakistani, that the then Chief Minister and the then Prime Minister have done a commendable job by raising a department as effective as CTD. And I hope elsewhere also they would put in similar effort. Lekin I think कि वो बड़ा अच्छा एक I spent about 4 hours in CTD, and मेरा एक security पे meeting मेरा एक regular feature है और हम मिलते रहते हैं. Every 3rd 4th day we meet, especially after the Bisham attack. तो जो infrastructure बना to deal with terrorism और ये जो menace है, I think Punjab has excelled in that. We as Pakistanis are very happy about it, और inshallah it is my resolve, it is our resolve कि हमने उसको improve करना है, हमने उसको latest technology के मुताबिक उसको upgrade करना है, और जहाँ जहाँ lacunas हैं, जहाँ जहाँ loopholes हैं, जहाँ जहाँ gaps हैं, हमने उसको बट्रेस भी करना है और उसको हमने बिल्ड भी करना है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है. What we are confronted with is a very complicated form of terrorism. उसकी वजह ये है कि हम बहुत ये बात करते हैं कि इकोनॉमी डिजिटाइज हो गई है, हर चीज़ डिजिटाइज हो गई है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेररिज्म भी डिजिटाइज हो गया. टेररिस्ट्स हैव गॉन डिजिटल, दे हैव गॉन सेल्युलर. इसलिए बहुत ज़रूरत इस बात की है कि वी आर अहेड ऑफ देम. मुझे मेरी टीम ने बताया कि जो गैंग्स ऑपरेट करते हैं पंजाब में, आई एम सिटिंग विद देम, और मैं उसका भी एक ऑपरेशन प्लान कर रही हूँ कि जो साउथ पंजाब की साइड पे जो गैंग्स ऑपरेट करते हैं, इन्होंने मुझे बताया कि हम जो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं दे आर अहेड ऑफ अस. उनके पास भी वो सारे ड्रोन्स हैं, उनके पास भी वो सब कुछ है जो हमारे पास अब आया लेकिन उनके पास पहले से है. और फिर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को भी पूरी एक्सेस है उनको, अफगानिस्तान से लेके आते हैं, स्पेशली आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एग्जिटेड फ्रॉम अफगानिस्तान. वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड देन जियोग्राफिकली एक हमारी इम्पोर्टेंस इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स जो ग्लोबल ग्रेट गेम है, उसमें पाकिस्तान को अपने पोटेंशियल का इतना नहीं पता जितना हमारे एनिमीज़ को पाकिस्तान के पोटेंशियल का पता है. चाहे वो इकोनॉमिक पोटेंशियल हो या वो कोई भी और पोटेंशियल हो, उनको पता है. इसीलिए बहुत एक एफर्ट होती है CPEC को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. आई थिंक गेम चेंजर, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान. और उसको अटैक करते हैं, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को वीकन करते हैं और उस चीज़ को स्ट्रेंथन होने नहीं देते, क्योंकि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड एनी काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ऑल इल्स. ये मेरा मानना है.
اور اسی وجہ سے کیونکہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی پلان میں, اسٹریٹجی میں, تو یہ پرابلمس ہمیں آتی ہیں. پھر ہمیں ہمارے جو فارمز آف ہر طرح کا جو ٹیررزم ہے اس کا ہمیں سامنا ہے. رائٹ ونگ ٹیررزم میں آپ لوگ سب جانتے ہیں ہم کس طرح سے ہر گلی میں, محلے میں ہم ایک پولیٹیکل جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اور جو وائلنس ہے اس کا ہمیں سامنا ہے. اور وہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, imposing their version of religion on the rest of the society. پھر لیفٹ ونگ جو ٹیررزم ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ that is also a very potent form of threat. پھر جو پولیٹیکل فیشزم ہے جو that has turned into terrorism, resorting political parties ka resorting to violence. I think it's a great cause of concern. And ہم سب نے دیکھا کہ 9 مئی کو اس کی ایک پوری پکچر دنیا کو نظر آئی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جب ریزورٹ کرتی ہیں وائلنس کی طرف تو ملک میں کیا اینارکی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. ایز اے پاکستانی مائی ہیڈ ہینگز ان شیم. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ میں نے بھی بہت اسٹرگل کیا ہے پولیٹیکلی, میری پارٹی نے اسٹرگل کیا ہے, میری فیملی نے اسٹرگل کیا ہے, اور ہمارا ایک اپنا ایک ایڈیولوجیکل سٹانس تھا, پولیٹیکل سٹانس تھا. I don't want to gloss over anything, but I want to state facts here. But ہمارے ایز اے پاکستانی کبھی دماغ میں بھی نہیں, the thought never even crossed my mind کہ this is also an option. کیونکہ we can be politically, we can have different philosophies, political ideologies, لیکن جہاں پر ہم کنورج کرتے ہیں, جہاں پہ ہمارا کنسنسس ہوتا ہے, that is that we are Pakistanis. جب میرے ملک پہ کوئی بات آئے گی تو میری پولیٹیکل فلسفی بھی بیک برنر پہ چلی جاتی ہے, میری پولیٹیکل آئیڈیالوجی, میرے پولیٹیکل بلیفس, میرے پولیٹیکل کریڈ بھی پیچھے چلی جاتی ہے. اینڈ دین واٹ از ان فرنٹ آف می از اونلی پاکستان. تو مجھے مائی ہیڈ ہنگ ان شیم بیکاز اٹ واز اے پارٹ آف پولیٹیکل فریٹرنیٹی واٹ ہیپنڈ آن 9 مئی. تو دنیا کو ہمارا کیا چہرہ نظر آیا, ہم نے اپنی ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کیے. جو چیز ٹی ٹی پی نہیں کر سکی وہ پولیٹیکل پارٹی نے کر دی. اور میں تو آنیسٹلی ایسے لوگوں کو پولیٹیکل پارٹی کہنا بھی نہیں چاہتی بالکل. ناؤ آئی ٹاک ایز اے پاکستانی, ناٹ ایز اے پولیٹیکل لیڈر اور ایز اے پولیٹیکل پرسن. ہسٹری میں وہ کبھی مناظر ہم نے نہیں دیکھے جو ہمیں 9 مئی کو دیکھنے کو ملے. تو یہ بھی جو ایک پولیٹیکل فیشزم ہے جس میں ایپک پروپورشنز, اور اس سے جو انسٹیبلٹی آئی ہے پاکستان میں, اور انسٹیبلٹی سے زیادہ جو انسرٹنٹی آئی ہے پاکستان میں. آپ کسی بھی جب بات کرتے ہیں کسی فارن انویسٹر سے, ڈومیسٹک انویسٹر سے, تو وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آج ہم انویسٹ کریں گے تو کل اس انویسٹمنٹ کا کیا ہوگا. تو دس از اے ڈیپر ایشو. اور اس سے جو امیج گیا ہے پاکستان کا, جو ایک پرسیپشن بنا ہے, جو ایک انسرٹنٹی آئی ہے, وہ بہت بہت خطرناک چیز ہے. ہماری ہورڈنگ پہ, اسمگلنگ پہ بھی بات ہوئی. صرف ٹیررزم اسمگل نہیں ہوتا اور چیزیں بھی اسمگل ہوتی ہیں. تو مجھے کئی دفعہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ مجھے جو میرے پنجاب میں ہمارے بارڈرز ہیں ود کے پی کے یا بلوچستان, ان کے اندر جو ہمیں تھریٹ ہے, جو پریشر آتا ہے, تو مجھے یہ افسوس ہے بیکاز آئی سی مائی سیلف ایز اے پاکستانی فرسٹ. اور اس پہ ہمیں تھوڑا اب بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ابھی چیک پوسٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے, وہ ابھی ہم ڈیٹیل میں آپ کو پریزنٹیشن دیں گے. لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے اسمگلنگ. میں نے جو ہم نے میٹنگ اٹینڈ کی تھی ایپیکس کمیٹی کی, اس میں جب اسمگلنگ کی بات ہوئی تو میں نے وہاں پر یہ کہا کہ اسمگلنگ میں کس ٹرک نے اندر آنا ہے, کس نے باہر جانا ہے, اور کس گاڑی کو ہم نے کہاں چیک کرنا ہے, یہ ایک روٹین کا میٹر ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی آن آٹو. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی پینک میں ہمیں خیال آیا کہ اب اس کی اسمگلنگ بند کرنی ہے, اس کی ٹریڈ کھولنی ہے. تو یہ بھی ایک بہت آرگنائزڈ ایک ایفرٹ ہونی چاہیے جس میں
प्रोविंस को ये डिसीजन लेना चाहिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना चाहिए कि पैनिक में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए. अगर हमने कोई किसी चीज़ की इनफ्लो और आउटफ्लो को रोकना है तो दैट शुड बी द डिसीजन ऑफ द स्टेट. It should not be a haphazard decision. It should not be taken in haste, and it should not be a one-off decision. कोई भी, I repeat, कि कोई भी ट्रक पंजाब के अंदर आता है या पंजाब से बाहर आता है, हमारे पास पूरा 24/7, 12 months a year हमारे पास एक mechanism होना चाहिए that every truck, every car should be accounted for. वरना आप चेक पोस्ट बना देंगे, मोटरवेज खुली हैं, मोटरवे से जो चाहे आ सकता है. मुझे अफसोस होता है ये कि KPK के मैं मुझे नाम लेना पड़ता है. अब मैं जहाँ पर ये काइट फ्लाइंग से जो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग्स हैं, एक डेथ हुई, हमने बड़ा उसको कंट्रोल किया, अल्लाह का शुक्र है. और मैं उस बच्चे को फैसलाबाद उसके घर भी गई जो इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठा, 22 years का लड़का था. तो जब हमने क्रैक डाउन किया मुझे पता चला कि वो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग है वो सारी KPK से आ रही है और ऑनलाइन बिक रही है. तो ये जो इस किस्म की चीज़ों का हमें सामना है, इसके लिए हमें बहुत मैं ये बात इसलिए करी, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस मीटिंग, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बना दें और आपके बाकी रास्ते खुले हों और एक कॉरिडोर बना हो लोगों के लिए खुला, टेररिस्ट के लिए भी अंदर आना जाना, स्मगलर्स के लिए भी. तो इन चीज़ों को भी हमें ये देखना चाहिए. दूसरा, मेरी नज़र में जो प्रेजेंटेशंस मैंने इनसे ली, इट्स जस्ट बिन अ मंथ दैट आई हैव assumed office, too little time to be commenting with a degree of finality. However, whatever I've garnered, whatever I've gleaned in this little time, I think इन्होंने बड़े अच्छे कॉमिंग ऑपरेशंस किए हैं. लेकिन स्लीप, हमारा शुक्र है, अभी कोर कमांडर साहब से बात हो रही थी, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कंपैरेटिवली पंजाब इज़ अ सेफर प्लेस. हाउएवर, पंजाब के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं जो इस वक्त कई दफ़ा डोमिनेंट होते हैं, उनकी जो निशानदेही है वो कितनी इम्पोर्टेंट है. उनको ट्रैक करना, उनको ट्रेस करना, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन उनके साथ जो सिंपथाइजर्स का नेटवर्क है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि राइट विंग एक बहुत बड़ा आपका एलिमेंट है और उसमें जो वायलेंस आ गई हुई है, तो उसके जो सिंपथाइजर्स हैं वो बहुत हैं और ये सब अंडरग्राउंड होता है. तो हमारी सक्सेस ये भी होगी कि हम इन सब चीज़ों को ट्रैक एंड ट्रेस करें एंड प्रीएम्प्टिव मेजर्स लें एंड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. बाद में तो देन देयर इज ओनली क्राइंग कि ये हो गया, उसने इत्तला नहीं दी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. बाद में तो फिर ये सब कुछ है, ये एक्सक्यूजेज हैं. तो ये जब मैं CTD गई तो मुझे एक और चीज़ जो मेरे सामने आई वो ये कि टेररिज्म इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन प्रॉब्लम. इट इज़ अ finished product of an entire process, right down from this, the ideology that breeds violence, चाहे वो extremism हो, किसी किस्म का भी. It is an entire process. I was really saddened to see, इन्होंने मुझे जब बताया कि, और वो तस्वीरें दिखाई, एक elite school system का बच्चा था, was only 18 years old. Am I right? और वो दोनों हाथों में ऐसे छुरियां और तलवारें पकड़ के और उसको उन्होंने बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया था. एंड वो इट वॉज ओनली सिम्बॉलिक. उसके इस तरह के बहुत सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं, किस तरह से इनकी ब्रेन वॉशिंग करके पीपल को यूथ को ब्रेन वॉश करके इस तरह से ये लोग रिक्रूट कर लें. और हमारे पास उसका बहुत ज़्यादा एविडेंस भी है. तो एंड इट इज हैपनिंग नॉट ओनली थ्रू जो सबवर्जन हो रही है, नॉट ओनली थ्रू स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बट ऑल्सो थ्रू सोशल मीडिया. तो ये जो थ्रेट, एक विजिबल थ्रेट होता है आपके पास, आप डोर नॉकिंग करते हैं, आप कोमिंग ऑपरेशंस करते हैं, आप ये एक चीज़ जो सोशल मीडिया पे हो रही है इट्स नॉट विजिबल. तो एक विजिबल थ्रेट है, एक इनविजिबल थ्रेट है. And then the political players who are now increasingly resorting to violence, उनकी भी जो politics है वो भी weaponize हो गई है.
that is also a form of terrorism that Pakistan is now confronted with, plagued with, I'd rather say. तो ये चंद चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में हैं, जो मैं इस हाउस में के सामने रखना चाहती हूँ, इस ऑगस्ट हाउस के सामने. एंड हम आपको एक प्रेजेंटेशन भी देंगे, और स्पेशली जो बशाम के वाक़या के बाद आई पर्सनली फील के चाइनीज़, क्योंकि सबसे बड़ा एक थ्रेट है, CPEC पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं, नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं, उसके अलावा प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे जो बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं उन पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं. लूज़ चाइनीज़ हैं, जिनको हम लूज़ चाइनीज़ कहते हैं. वो किसी डिसिप्लिन में नहीं आते, वो किसी आपके एम्बिट में नहीं आते, और वो रिजेंटफुल हैं कि आप उनके ऊपर जब सिक्योरिटी अपने मेजर्स इम्प्लीमेंट करते हैं. आई हैपन टू विजिट डे बिफोर येस्टरडे द चाइनीज़ काउंसलेट, एंड उन्होंने दो तीन बातें की which I would want to relay here. I think उनको भी एक ये फील होता है कि उन जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं they're more of a chain, more of fetters that they have to face. तो मैंने उनको ये बात बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि I know that this might be cumbersome for you, this might be uncomfortable for you, but we do this because we value you a great deal, and we attach a lot of importance to your security, your safety as our brothers, as people who are contributing massively to the development of Pakistan in every single way. तो ये you have to bear with this. Secondly, उन्होंने एक बहुत important बात की. उन्होंने कहा कि CPEC के खिलाफ इन चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन बायलैटरल जो रिलेशंस हैं उनके खिलाफ there are forces in play, there are forces who are trying to spread a narrative which is based on all negative things which are obviously not true. तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कि since social media now is an unbridled horse and आप उसको उस तरह से you can't regulate it, however anything that you see on social media does not in any way reflect the sentiments of a Pakistani. तो जो एक perception में build करते हैं जो anti Pakistan forces हैं within Pakistan, operating within Pakistan, those that call them Pakistanis, चाहे वो political हो या जो भी हो, या outside Pakistan. तो हमने एक narrative पे भी काम करना है, और वो भी हमारी एक joint effort होनी चाहिए कि उस नैरेटिव को, क्योंकि एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम दैट. ये जो बच्चे यूथ जो आपकी करप्ट होती है मेंटली एंड जो ब्रेन वॉश होती है, वो भी उस नैरेटिव के जाल में फंसते हैं, दे वॉक इनटू दैट ट्रैप. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. लूज चाइनीज़ का एज वी ऑल अंडरस्टैंड कि उनको थ्रेट है, लेकिन ये सारी कैटेगरीज में से वो सबसे लीस्ट थ्रेट उनको है. तो हमें पहले CPEC नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करना है, और उसके बाद हम लूज चाइनीज़, क्योंकि आपके डिसिप्लिन में भी नहीं, तो वो उनको लीस्ट थ्रेट है इस पे, ताकि खुदा न खास्ता बाकी सूबों की तरह कल को कोई वाक़या होता है तो उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा इंट्रोस्पेक्शन होती है, या क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क होता है, या वो ब्लेम गेम होती है कि इसने मुझे नहीं बताया, इसने मुझे नहीं बताया. पंजाब शुड बी अबाउट दैट, एंड वी शुड वर्क एज वन टीम बिकॉज वी आर वन टीम. नंबर वन. Number two, nature of the threat that we are facing at the moment that we are talking about, be it smuggling or repatriation of Afghan refugees, या Afghan people, या terrorism and all forms of terrorism. The nature of the problem is permanent. As of now and in the foreseeable future, it is a permanent nature problem. उसके लिए हमारा जो solution है, that should also be ever evolving, of evolutionary nature, and also permanent. Haphazard response, broken, fractured response, reactionary जो है वो नहीं होना चाहिए. हमें this should be built into our system and this should be on auto. इसको improve हमें करना चाहिए, पर जो basic हमारी चीज़ें हैं, चाहे वो intelligence sharing हो, intelligence को improve करना हो, अपनी capacity building करनी हो in every area, वो सब जो है वो हम करेंगे साथ साथ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर हमें एक तरह से वो काम करना चाहिए. एंड
as a Pakistani, as a blue-blooded Pakistani, as a daughter whose father has offered great service to Pakistan in terms of Pakistan ki jo economy hai, its infrastructure, and making Pakistan the first ever Islamic nuclear power. And as a father who takes a lot of pride in being the son of the soil, and being a daughter of a person who has rendered unparalleled services in every sector for our beloved country, I reaffirm my resolve that I will, as his legacy bearer, as his torch bearer, and as a Pakistani, as I said, and as Chief Minister of Punjab, मैं इसको लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ, आपके साथ मिल के काम करना चाहती हूँ, किसी भी चीज़ में वो हो, किसी भी फील्ड में वो हो, किसी भी वो एरिया में हो, किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी सेगमेंट में हो. हम SIFC के साथ भी काम कर रहे हैं, हम LIMS के साथ भी काम कर रहे हैं, which of course is an offshoot of SIFC. और इसी तरह मैं इस फोरम को भी इसका फ़ायदा उठाते हुए I just want to tell you that I am your Chief Minister, we are all your team and we should work together as a team. ये जो हमारी स्पिरिट है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, उसको हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए. एंड माई ऑफिस इज़ देयर फॉर यू 24/7. थैंक यू वेरी मच. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पहले एपिक्स कमेटी